Okay, class, Assalamu alaikum. I think we should start क्योंकि बीच में आप लोगों को भी पता है questions होते हैं and there are things जिसकी वजह से drag हो जाता है और फिर I end up not being able to finish. So last time Dr. Basma talked about the visual perception और visual perception की बहुत सारी उन्होंने basic physiology आपको बताई थी. We'll be talking about the conjugation of senses, how the senses are integrated and perceived. और उन senses की, उन sensations की integration से how we make an image of the world around us, right? इसके अंदर we'll briefly touch upon the visual perception again. We'll briefly touch, very briefly touch upon hearing and in a similar fashion जो बाकी sensations हैं like touch, temperature वो आप लोगों को in passing मैं mention कर दूंगा. What is sensation? Sensation is when you detect something in the environment, right? उसका कोई meaning नहीं है, उसका कोई specific interpretation नहीं है. It's just a stimulus that we perceive. That is called a sensation. चाहे वो visual stimulus हो, चाहे वो auditory stimulus हो, चाहे वो tactile stimulus हो. When we just perceive a stimulus, that is called a sensation. And sensation, for the same reason, is a passive phenomena. Passive phenomena का मतलब है, it depends on the properties of the stimulus. It depends. If the stimulus is too strong, we get a stronger sensation. If the stimulus is too light, we get a lighter sensation. So, sensation depends on the properties of the stimulus. Also, it is a very limited phenomena. Limited in the sense that it is limited to the properties of the receptor that perceives that sensation. अगर वो रिसेप्टर किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वी विल नॉट परसीव अ सेंसेशन. अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज द विजुअल स्पेक्ट्रम विद ऑल द पैराफर्नेलिया ऑफ द विजुअल परसेप्शन. हमारी आइज़ जो कलर सेंस करती हैं, हमारी आइज़ जो मूवमेंट सेंस करती हैं, ये सारी चीज़ों के बावजूद व्हाट वी आर सेंसिंग इज़ अ वेरी टाइनी स्लिवर ऑफ द होल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसके beyond both ends, the ultraviolet and the infrared, the eyes do not perceive and they're not sensitive to those wavelengths. So, इसी तरह, to give you an idea of what other wavelengths we use, radio waves हैं, microwaves हैं, gamma rays हैं, इनकी existence को हम use कर रहे हैं, but we are not perceiving them through our eyes. कुछ ऐसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट कर लिए हैं जो इनकी परसेप्शन को रेंडर कर देते हैं विजिबल, लाइक दी सबसे जो अभी लेटेस्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप जो बाहर गया है, इट बेसिकली डिटेक्ट्स इंफ्रारेड यूनिवर्स. और वो इंफ्रारेड को हम कैसे देख सकते हैं? अगर वो इंफ्रारेड में डिटेक्ट कर रहा है तो वो अगर पिक्चर में भी इंफ्रारेड दिखाएगा तो वी विल स्टिल नॉट बी एबल टू सी इट. द ओनली वे इट मेक्स इट visible is by rendering the infrared perception into the visible spectrum. इसी तरह audible spectrum हमारी total hearing range का बहुत total mechanical waves का बहुत थोड़ा सा range है, anywhere between 20 hertz to 20,000 hertz. इसके beyond is either ultrasound or infrasound. Infrasound is those waves which are of a lower frequency and ultrasound is those waves which are of the higher frequency. और हम वो नहीं सुन सकते. There are other animals that can respond to those waves और उसमें बहुत सारे different animals के spectrum हमने यहाँ पे compare करने की कोशिश की है. Bats can hear actually way beyond our spectrum. इसी audible frequencies. Insects, डॉल्फिन्स की भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है, जबकि वेल्स की बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है. सो देयर आर अदर स्पीशीज दैट कैन कम्युनिकेट इन
wavelengths and frequencies which we cannot. Dogs, Dr. Basma ने किसी एक अपनी पिछली presentation में example दी थी of my pet dog that can respond to an incoming car way before we can actually hear it. और उसकी वजह यही है कि उनकी hearing हमारे से बहुत different है. What is perception? Perception is the meaning we give to that sensation. अगर हमें और perception dependent है on our brain's ability to give meaning. Therefore, perception is unlimited and it's an active phenomena. Active phenomena का मतलब है brain gives meaning to that sensation. Visual cortex में वही sensation जाएगी तो we know it's light that we perceive. Auditory cortex में वही sensation, वही electrical stimulus जो nerve का है जाएगा तो we will perceive it as sound. So it's an active phenomena that depends upon the processing of the brain and it's unlimited regarding the meaning we give it. हमें इसको brain process चूँकि meaning दे रहा है तो meaning की as such limit नहीं है, ये receptor dependent नहीं है और ये stimulus dependent नहीं है. Integration of perception. Integration of perception का मतलब है different तरह की perception को जब हम weave together करते हैं to give it an even higher level meaning. So इसको मैं level 2 meaning कह रहा हूँ. इसमें उस original stimulus की interpretation को modulate करती हैं कुछ instinctive चीज़ें जो hardwired हैं हमारे brain में और कुछ डायनामिक चीज़ें हैं जो which we learn with experience और वो आहिस्ता आहिस्ता incoming stimuli को modulate करती हैं. The difference between a rope and a snake. A child has to learn from experience. The snake moves, the rope does not move on its own. ये चीज़ें learned हैं. देखने में अगर एक सा भी लगेगा तो a living thing and a non-living thing का वो difference experience से बताएगा. So these are the things that can modulate and these modulations can give an even higher level of meaning to the sensory input. जी बच्चे. Sir, then what is the level 1 meaning? Like, what does level 2 mean exactly? Level 2 meaning, level 1 meaning तो है कि हमें एक sensation आई और हमने detect कर ली. Level 2 meaning है कि ये sound है कि vision है. Level 3 meaning है जो vision हम देख रहे हैं वो एक बुक है या वो एक गाड़ी है या वो एक loaf of bread है. There is another level 3 meaning. जी पुत्र. So what does instinct mean from like a biological perspective? Like is there something like hard-coded inside us? Yes, these are hardwired circuits that we are born with. और ये when we talk about motor system in subsequent lectures, motor system में there's a small exercise जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है which I'll make you all do and you will understand immediately कि instinct का मतलब क्या है. वो जो hardwired circuits हैं हम उनको consciously override भी करने की कोशिश करें तो we have to make a very very strong effort to override them क्योंकि वो instinctively hardwired है हमारे अंदर. ठीक है, we'll talk about, remind me to talk about that. जी. In what case would you have to go against the hardware? ये फिर सब जोक जो है ना वो दोबारा अपनी बेसलाइन आवाज पे चले गए हैं. In what case would you have to go against the hardware? We don't have to go, but even if we try to, we can't because they are hardwired, right? ये exercise मैंने कहा ना, we'll talk about this when we talk about movement. Level 3 meaning. Level 3 meaning है. Quick. I still don't fully understand the difference between level 1 and level 2. यार level 1 is a basic level of meaning जो हम दे रहे हैं कि sound है कि sight है. Level 2 है कि sight है तो वो sight एक लड़के की है कि एक लड़की की है. So one is distinguishing between two different stimuli and the other is differentiating between within a stimuli. Listen, this is one explanation of level 1 and level 2. Level 1 is the basic interpretation of the stimulus. वो किसी भी form में हो. So when we were doing vision, the occipital cortex tells you which wavelength, which intensity. Then the temporal lobe tells you this pattern fits a cup. And the dorsal pathway that was going to the parietal lobe tells you if you want to use vision to pour the tea, these are the That's muscle. level 3. That's level 3. So that's, I mean, this is just sort of naming things that you've already read. So these hardwired mechanisms, are they only present in the CNS or are they more
apparent in the both CNS and mainly CNS, क्योंकि circuits तो हैं ही CNS में. but isn't the PNS less plastic, so they hard? PNS is just wires. PNS does not have circuits. PNS is peripheral connections. जो circuits हैं वो सिर्फ central nervous system में है, be it in the brain or in the spinal cord, जहाँ पे basic level circuits हैं, लेकिन circuits सिर्फ central nervous system में है. ठीक है? अब I am not going to answer any question about the hardwired thing. वो movement का मैंने कह दिया, उसमें बात करेंगे. Level 3 meaning is when multiple sensations, multiple perceptions integrate, और वो जैसे मैं बोल रहा हूँ and at the same time I'm making a certain gesture, और वो gesture आप interpret कर रहे हो along with the sound that you're hearing. So that gives it a totally different meaning at all. Aggressive हो के मेरी sound की intonation और होगी, लेकिन facial expression अगर different होगा तो वो there is a discord and the brain gets confused. If I'm giving you an aggressive look and being aggressive in my sound, that is concordant. So multiple sensations को जब आप integrate करोगे तो that gives it a level 3 meaning. इसकी एक सिंपल मिसाल मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा था थोड़ा सब्र कर जाया करो, आगे आगे subsequent slides में ये चीज़ें आ जाती हैं. We'll talk about taste and the experience of taste of food that we get. इसके अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल basic simple sensations हैं. Smell, taste, temperature, ये वो हैं जिनके अपने अपने receptors हैं और वो stimulate हो रहे हैं. जब वो stimulate होते हैं तो they give us a sensation. उसके बरक्स कुछ sensation के साथ बाकी factors मिल के उसका थोड़ा सा meaning different करते हैं. वही मीठी स्मेल कीनू की भी है, मीठी स्मेल सेब की भी है, मीठी स्मेल गुलाब जामुन की भी है और मीठी स्मेल एक परफ्यूम की भी है. बट स्टिल यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम अमंग देम. वो डिस्टिंक्शन जो आती है उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं एंड व्हेन दे कम इनटू प्ले दे गिव इट अ लेवल 1 मीनिंग कि वो थोड़ा सा उसको इंटरप्रिटेशन को हायर ऑर्डर कर दिया है. इसी तरह फ्लेवर किसको कहते हैं? फ्लेवर इज जो एक आपने चॉकलेट मूस मुंह में डाला है, थ्रू द बैक ऑफ योर थ्रोट इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपको उसकी स्मेल, उसका टेस्ट मिल के जो एक फीलिंग देता है, जो सेंसेशन देता है, दैट्स कॉल्ड द फ्लेवर. और फ्लेवर में aroma and taste both combine to give you a flavor of something, and that's why chocolate mousse कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी bland भी हो सकता है, क्योंकि वो है तो chocolate mousse. level 1 meaning आपको पता है वही है, लेकिन level 2 meaning में good और bad या उसकी आपका favorite वाला है कि नहीं है, वो चीज़ें आपको distinguish कर देती हैं. Then come the थर्ड लेवल ऑफ हायर ऑर्डर मीनिंग, और वो लेवल 3 मीनिंग है जिसके अंदर बहुत सारी सेंसेशंस इंटीग्रेट करके आपको दे रही हैं. हॉट कॉफ़ी अगर ठंडी हो जाए तो डजंट बिकम कोल्ड कॉफ़ी. कोल्ड कॉफ़ी का अपना एक वो टेम्परेचर है, उसका एक अपना टेक्सचर है. इसी तरह चॉकलेट केक और हार्ड चॉकलेट दोनों चॉकलेट्स हैं, लेकिन चॉकलेट केक का एक अपना टेक्सचर है, उस टेक्सचर के अंदर उसका अपना फ्लेवर है. बेक्ड अलास्का या वो क्या है ये वॉल्केनो वाला क्या होता है, मोल्टन लावा. अब मोल्टन लावा के अंदर देयर इज दिस कोर ऑफ हॉट चॉकलेट विद a cold sponge outside, and at times you eat it with ice cream. So ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक total gustatory experience दे रही हैं, and that gustatory experience is what the brain registers. इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. molten lava has to look good as well, so sight का भी थोड़ा बहुत रोल है. I'm not sure about the role of moisture in it, लेकिन वो जो टेक्सचर है उसमें डेफिनेटली मॉइस्चर का रोल है. आई एम सॉरी ये लाइट्स बहुत ज़रा ठीक क्लियर दिखा नहीं रही, बट दिस इज़ टच, दिस इज़ प्रोप्रियोसेप्शन, दिस इज़ प्रेशर. वो जो हमारी टंग फील करती है उसकी फील को, वो सारी इन चीज़ों से डिपेंड करके बनती है.
Now this is one slide I want you all to think about a little deeply. इसमें ये है, on the left is this layer of meaning जो मैंने अभी आपको बात की कि एक sensory perception हुई, sensation हुई, perception हुई, integration हुई और conjugate कर गई. वो simple एक linear process लगता है कि one builds on the other. But this is not that simple. इसमें बहुत सारे feedback loops हैं. Every level of higher meaning gives a feedback to the lower level और वो एक predictability model बनाता है. Predictability model का क्या है कि आपने vision में देखा है कि chocolate mousse, या चलो chocolate बहुत ज़्यादा हो गई है, you've seen an apple pie. अब apple pie आपको देखते ही your brain starts to expect a certain flavor. And when you get that flavor, you like it. When you don't get that flavor, वो उसके अंदर फिर you start to looking for things that are not on, that are wrong. जी बेटा. Sir, is memory a feedback? Yes, yes. Memory level 3 पे अगर आप पिछली स्लाइड में जाओ तो ये ऊपर सारी previous memory level 1 पे भी आ रही है, level 2 पे भी आ रही है, level 3 पे भी आ रही है. और यही वो चीज़ है. memory है क्या? memory is altering your output based on the previous experience. वो हर level पे जा रही है. So these white feedback arrows are actually memory, right? So memory of something can modulate the prediction that your brain makes of some expectation. जी बेटा. So this is how basically taste aversion works. Matlab, if you have had a bad experience, this is Yes, 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 absolutely. And there are drugs that can actually modulate those circuits to make you averse to certain things. ठीक है? So, if you've had a friend of mine who basically had really bad gastroenteritis after a clam bake, she would look at a clam, not even taste it, and that she would start becoming nauseous just by looking at the clam. And that's, I've been told that's not unusual. That's PTSD. जी बेटा. Sir, the anti-abuse medication that Yes. they give to recovering, they play on the same. Yes, that's exactly what I was referring to. उनमें भी एक यही mechanism है कि वो आपको averse करती हैं. Smoking, anti-smoking medication जो है वो आपको smoking के pleasure से pleasure तो नहीं होता, but वो आपको smoking की satisfaction से So antabuse and how many people know Chantix here, the medication that you take to give up smoking? Has anybody? So the antabuse Nobody is. wants to give up smoking in this crowd. I mean, Allah maaf kare to astaghfirullah, apne aap ko khud marna. So antabuse and Chantix work on very different principle. Antabuse actually physically makes you feel really bad. If you drink alcohol, then you feel like death warmed up. Chantix, what Chantix does is that it basically, when we do pleasure, you will see that there are actually centers in the brain where you can turn off pleasure. So when you turn off the pleasure associated with smoking, then all the disgusting mouthfeel is all that is left. So people who give up smoking by using Chantix actually dread smoking again because they feel that they will feel that bad feeling again. The pleasure is gone and the bad things remain. Does that make sense? They're two very different principles. Okay, so जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ with this diagram is, उसी को मैंने diagram को थोड़ा सा zoom in कर दिया है कि ये जो layers हैं ना, predictive model जो आपको बता रही हैं, ये हर जगह पे brain में encounter होगा. The predictive model works for your movements, the predictive model works for your perception, the predictive model works for your thoughts, predictive model works for your memories, everything. So brain is a predicting machine. It tries to predict what you may encounter, and if it coincides with your prediction, the brain accepts it readily. अगर वो नहीं coincide करता तो it takes a while for the brain to process it. आपने पहले हाथ खड़ा किया था. If you've had a good experience with Louder. if you've had a good experience with a certain type of I food can't hear you. and a bad experience with it, so and if you continue to have good and bad experiences with the same type of food, what would your brain predict? Again, the brain will stay confused and कभी उसको positive feedback मिल रहा है, कभी उसको negative feedback मिल रहा है. So वो जो strength of circuit है जो develop होनी है वो नहीं होगी. So it will probably not have much effect.
Sir, why is it so that some people taste food differently than others? For example, sushi is not something that everybody likes, right? But some people love it, and their predictive model is different. When Yes. they eat sushi. There are so many other things जो predictive model में अभी आगे वो डॉक्टर बासमा की ही पुरानी प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड मैंने इसमें डाली हुई है which tells you that the brain uses a lot of inhibitory input from higher up to decide what stimulus to allow going up or not. और उस जो inhibitory input है वो हर बंदे की different है, उसकी strength हर एक के अंदर different है, उसका weightage हर एक के अंदर different है. So each individual person has its own gate जो allow करता है कि हमारी sensation कहाँ तक जाएगी और किस center में वो जाके stimulate करेगी, pleasure center में या aversion center में. So उसमें experience भी आ जाता है, उसमें आपके दूसरे receptors आ जाते हैं, उसमें आपके I don't know. No, so it's a bunch of things. So you'll notice that there's some preference is hardwired. So मीठे खाने वाले लोगों के घरों में मीठे खाने वाले लोग पैदा होते हैं. Some of it is cultural, right? Like the Japanese eat sushi culturally, so kids who are born in Japan are going to be exposed to it. Some of it is आपके घर में क्या खाया जाता है. So it's like now बिल्कुल nuclear influence आ रहा है. And then exposure. Right, and then जिन लोगों को autism होता है उनके लिए lots of people who have autism have mouth feel issues, so they can't eat anything mushy or so the answer to your question is it's very, very complicated. It's complicated. Okay, अब ये जो integration है ये कहाँ पे हो रही है? This is where we go back to Dr. Basma's slide. Integration. There is a nucleus in the center of the brain called the thalamus. So thalamus को हमने अपनी शुरू की presentations में कहा था it's the grand central station of all the sensory input. All the sensory input has to go through the thalamus to reach the cortex or other parts of the brain. So thalamus में there are nuclei which cross-link the sensory perception received from different sources. Thalamus की actual location अगर आप MRI पे देखना चाहो तो it lies right in the middle on either side of the central cavity called the third ventricle. So इन दोनों में अगर आप compare करना चाहो तो this is where the thalamus is. Thalamus is at the core of the brain और thalamus को I tried to find the diagram जो हम लोगों ने अपनी anatomy में पढ़ी थी while we were students. In Grey's Anatomy. Believe me or not, Grey's Anatomy is a book. It's not just a series. So Grey's Anatomy के अंदर there is a diagram that color codes the areas of thalamus with the areas of the cerebral cortex. So actually अगर उन color codings को देखा जाए तो there is hardly any area in the cortex that is not represented in the thalamus. So thalamus has sensory input from everywhere and it connects to every part of the cortex. So thalamus से वो सारी sensory integration होती है और basically sensation और perception के जो तीन main steps हैं regardless of ये जो सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो एक ही है कि stimulus आया उसने receptor को stimulate किया, decoder और the transducer is the receptor और experience वो बाकी सारे level 1, level 2, level 3, level 4 जितने भी meanings आ रहे हैं they all give rise to this experience of that perception. Vision level 1 इसमें मैं quickly वही डॉक्टर बसमा वाली presentation को quickly go through करूँगा. level 1 में अगर आप देखो तो ये sensory receptor है eye और उसके अंदर there are light sensitive cells lying at the back of the eye called the retina. और वो retina को जब vision stimulate करता है तो वो nerve impulses पीछे जाती हैं in the optic nerve. They cross, part of them cross over at the optic chiasm and then forms the optic tract which carries fibers from both sides of the optic nerve. और optic chiasm में जाके ultimately वो optic cortex को stimulate कर देती हैं. इसमें से बात वही है कि ऑप्टिक chiasm के बाद अगर वो डायरेक्ट ऑप्टिक कॉर्टेक्स को जा रही हैं तो वो थैलेमस कहाँ गया बीच में? These are the nuclei at the back of thalamus, the lateral geniculate nuclei.
Just to give you an idea of where the optic nerves are, this is the eye. ये हमने पूरा एक cerebral hemisphere यहाँ से remove किया हुआ है, and this is where the eye goes back, crosses over in the optic chiasm, and then the optic tract stimulates the visual cortex. इसके अंदर Dr. Basma specially asked me to give you a brief idea of the laterality of vision. Vision के बारे में हमने हर चीज़ के बारे में बात की थी कि everything from out there is represented in the contralateral half of the brain. इसी तरह all the movement that is executed in the contralateral half of the body. It originates in the opposite hemisphere. Eyes, since we have two visual receptors, each eye perceives both halves of the visual field. मेरी right eye में left वाला side का visual field भी नज़र आ रहा है, right वाली side का visual field भी नज़र आ रहा है. इसी तरह मेरी left eye में right visual field भी आ रहा है, left visual field भी आ रहा है. So by crossing over of only half of the fibers, मेरे visual fields की distribution contralateral cerebral hemisphere में चली जाती है. किस तरह? This is the left eye that has the left-sided retina and the right-sided retina. ठीक है? थोड़ा सा complicated है, एक दफ़ा इसका concept समझ लो, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह आधी crossing over से भी हम exact half of the visual field opposite half of the brain में चला जाता है. Left eye with left and right parts of the retina. The left part of the retina is actually receiving light from the right visual field, और ये right half of the retina receives light from the left visual field. जो right visual field से आ रहा है, उसने up left cerebral hemisphere में जाना है. Think about it. The light that goes from the right visual field has to go to the left cerebral hemisphere. To get there, this part of the retina does not have to cross over to the other side. ठीक हो गया? Any confusions? जहाँ पे मैं questions expect करता हूँ, वहाँ पे आते नहीं हैं. आ गया. So the left half is going towards the left half of the brain. देखो बेटा, left retina. पिछली diagram दिखाया ना, तो उसमें actually उन्होंने दिखाया हुआ है. इसे पिछली वो देखो. ये देखो, ये red light आ रही है from the right half of the retina. So from the right visual field. Confusion इसलिए होती है कि हम retina को confuse करते हैं with the visual field. Visual field is what we see out there, right? तो right side का जो भी मेरा visual field है, if I'm standing in the middle of the class, ये right वाले जितने seats हैं, वो मेरे left brain में जाने हैं. So left eye के already लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, राइट आई के क्रॉस ओवर करके लेफ्ट साइड पे जाते हैं. गेट इट? Yes, I have a question. श्योर. Is this why we don't see our nose? Oh, we don't see our nose because we can't go beyond this. We do see our nose, but we only see the edge of the nose. ठीक है? So what we can draw from this is the proportion of left and right vision will be the same even if we have one eye. Yes, but what do we lose if we have one eye? The stereoscopic vision. The vision of both eyes. Why do we have both eyes then? Two eyes? Two eyes need to converge to look at the closer object and diverge to look at the farther object. So that conversion actually gives us a clue about how near that object is and how far the other objects are. Ji sir. How the brain decides कि कहाँ पे left खत्म हो गया right start हो गया है? मरवा देता. Yes, it is very specific. वो जो हमारा focal point है ना, the fovea, it's called the fovea centralis. Fovea centralis is the threshold. उससे lateral जितना है वो एक साइड पे जाएगा, उससे medial जितना है वो दूसरी साइड पे जाएगा. It's the focal point of the eye, of the retina, जिसके एक side is right, the other side is left. जी बेटा. You talked about the converging and diverging of images, right? Louder. So for that, I don't get it because like if we have one lens in each eye, right, we would have the image present in each eye. So Right. why would it matter if you don't have one eye, if you can't see from one eye? Good. There is a certain amount of depth perception we can get
by the feel of the lens. When the lens contracts to become thick, it focuses on the near object. When it relaxes to become thin, it focuses on the farther object. लेकिन ये इतनी कम मूवमेंट है कि वो परसेप्शन उतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि फार्दर ऑब्जेक्ट्स में आप देखो तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्लोजर ऑब्जेक्ट में बहुत एक्यूट है, फार्दर ऑब्जेक्ट में it does not matter if I need to focus 4 meters apart or at infinity. So from 4 meters to infinity मेरे लेंस को बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत नहीं है. So वो डेप्थ अगर हमारे पास 2 आइज़ हों तो वो फिर भी कन्वर्जन से हम बता सकते हैं. ओके, दूसरा स्पेसिफिसिटी, डॉक्टर सुलेमान, ये आपका क्वेश्चन, वो कि कौन सा हाफ है जो कहाँ पे जाएगा. देयर इज अ सर्टेन पार्ट विजुअल फील्ड विच ओवरलैप्स इन बोथ आइज. जो मेरा मीडियल हाफ ऑफ द लेफ्ट आई है वो मीडियल हाफ ऑफ द राइट आई से ओवरलैप करता है. दैट इज द हाफ, दैट इज द पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर वी हैव अ स्टीरियोस्कोपिक विजन, और दैट इज द पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड जहाँ पे हमें डेप्थ परसेप्शन एक्यूरेटली होती है. लेकिन उसके बावजूद आप ये कलर डिफ्रेंसिएशन देखो तो ईच कलर इज वेरी वेरी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन. यहाँ तक कि जो सुपीरियर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है, जो पार्ट ऑफ द थैलेमस है, उसमें भी आउटर लैटरल ऑफ द लेफ्ट आई हैज़ अ सेपरेट एरिया फ्रॉम द आउटर लैटरल ऑफ द राइट आई. सो वो जो स्पेशल फाइडेलिटी है ऑफ लाइट वो बहुत एक्यूरेट है, और उसकी एक्यूरेसी अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करती है इन द विजुअल कॉर्टेक्स, इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स. ओके, हियरिंग का इसी तरह, सॉरी. I had a question about the overlapping visual field. Is that necessary for the blind spot recovery? क्योंकि हम blind spot. That's one thing it's necessary for. The other thing अभी आगे आ रही है. Okay. Hearing में भी इसी तरह level 1 perception is distinction between different frequencies of sound. और वो डॉक्टर बासमा ने आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है. यहाँ से साउंड वेव आती हैं, ear drum which is called the tympanic membrane उसको vibrate करती हैं. There is a mechanical system of bones in the middle ear that actually amplifies that vibration, and that vibration ends up producing ripples in a fluid in the inner ear, or those ripples are picked up by pressure sensitive cells in the cochlea. Cochlea is the coiled part of the inner ear, और वो different frequencies को different cells respond करते हैं, और वो vestibulocochlear nerve के अंदर impulse generate करते हैं जो कि brain में जाके auditory cortex को stimulate कर देती है. यहाँ तक level 1 है. Level 2 of visual perception अब क्या होगा? What do you see here? हाय हाय, इसमें तस्वीर सही नज़र ही नहीं आ रही. ये गुलदान पड़े हुए हैं 4-5 तरह के, right? Vases. Yeah, you could call them chess pieces. You're already jumping to vision 2. Yes. Arches and people standing. Yes. वो अब मैंने आगे दिखाना था, आप लोगों ने बता ही दिया. What do you see here? This is a vase, right? Yes, this is a vase. लेकिन अब क्या लग रहा है? Now you can clearly see those two faces which you could barely make out here. लेकिन अब आपने वो चूंकि वो देख लिए हैं तो अब आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है. ये मोमेंट है जो मैं सुनना चाह रहा था सबसे. What do you do if you saw the face first? Yeah, you don't do anything. You already have a level 2 processing there, right? So इसी तरह अब अगर आप इसको देखो तो you can actually appreciate a bunch of faces here, people standing in the empty spaces between the vases. Can you see them now? I just saw the vase now for the first time. You saw these things first, right? No, I saw the people first. और you saw the people first. वो इसलिए क्योंकि ये लाइट ठीक आ नहीं रही. इस लाइट में 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है. नीचे ये जो आपको ये लाइंस और ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बाकायदा वेज के ऊपर वो कर्व्स हैं. सो वो नज़र आते तो you would have seen the waves first, right? Sorry, एक क्वेश्चन था.
example, for me, if I focused on the brown part of it, I could see the chess pieces, for example. And if I focused on the brown part of it, I could see the people. Yes. Does that depend on what you're focusing at as well? Yes, that also depends on what contrast you're getting. If your background is brighter than the object itself, you tend to concentrate on the background. ये एक बहुत बड़ा क्विज है जो डॉक्टर बासमा की, ये आपने दिखा दिया हुआ है या दिखाना है वो ड्रेस? वो दिखा दिया हुआ है. But that actually, the quiz has to do with shadow and Yes. light. This more has to do with, remember the very first day we started teaching perception, we said brain is a pattern recognizing machine. Yes. So ये दो alternative patterns हैं, and देखो ये जो है ये sensory level पर नहीं है, ये pattern recognition level पे है, because इसमें you can switch. You can see the chess pieces, you can see the people. Whereas वो जो line थी, जब आपको पता भी चल गया था कि वो equal है, you still saw it as long. ये देखो ना, इसमें आपको बिल्कुल clearly, once you start seeing the faces, you cannot unsee them. जी. Does what you see depend on how far you are from the image or the angle you're? Not really, but it does depend on the totality of the image if you're seeing. अगर मैं आपको ये आधा वेज दिखाऊं और सिर्फ इतना आप नज़र आ रहा हो आपको, तो आप सबसे पहले फेस देखोगे, क्योंकि आपको वो वेज पूरा नज़र ही नहीं आ रहा, वो बन ही नहीं रहा जहन में. So उस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे इतना नहीं डिपेंड करता. There's some optical illusions where, let's say you have to tilt the image at a certain angle, and when you tilt it back, you start to lose the secondary image. Why does that happen? Because there are two conflicting images being reflected refracted onto your retina, और retina receive दोनों को कर रहा है, लेकिन brain, इसकी simple example है, आप अपनी आईज को कभी आपने स्क्यू किया है, ऐसे करके देखो तो योर विजुअल फील्ड स्प्लिट्स इनटू टू. ज़रा सा नीचे आंख के नीचे हाथ रखो, डोंट प्रेस टू हार्ड. सो आपका विजुअल फील्ड दो में स्प्लिट कर जाता है. सो ईच आई इज परसीविंग अ डिफरेंट विजुअल फील्ड. और अगर दोनों आईज कॉन्जुगेट कर रही हैं और वो विजुअल फील्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं, फिर तो इट ऑल मेक्स सेंस. लेकिन जो ही वो डिस्कॉर्डेंट होते हैं, यू लूज द सेंस. और वो जब सेंस लूज होती है, तो द मोमेंट यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन विजुअल फील्ड, द अदर डिसअपीयर्स. और वो जब डिसअपीयर करता है, तो आपके उस विजुअल फील्ड के अंदर अगर कोई मूवमेंट आती है, तो ये डिसअपीयर कर जाता है, वो फॉरन अपीयर कर जाता है. ये ब्रेन की इंस्टिंक्टिव प्रोसेसिंग है कि इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मूवमेंट मोर देन इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कलर. जी पुत्र. Is the perceptual system malleable? Because I've इट read, वेरी इज. because I read this experiment where people wore glasses just because the image flip nazar aati thi, and eventually their vision adjusted. Yes, So that's ये this happens in people who have squint. वो जो congenital squint के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर the vision never overlaps. The vision of two eyes, the visual fields don't overlap. And in those kids, the brain learns to suppress the image of one and continues to concentrate on the other eye. And over time, that eye, जिसका image suppress हो रहा है, it ultimately loses vision. वो brain process करना ही बंद कर देता है. So just think about that. The hardware is all there. Yep. But एक साइड की सॉफ्टवेयर ने अपने आप को एक्सटिंग्विश कर लिया है, और एम्ब्लियोपिया इज वेरी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट. एक दफ़ा वो आपको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाए लेजी आई के साइड की, तो उसको एक्चुअली फिक्स करना अडल्टहुड में बहुत मुश्किल है, विच इज़ वाई इतना एम्फेसिस होता है कि स्क्विंट को अर्ली ट्रीट करो, वरना एक साइड का विजन उड़ जाता है. बिल्कुल ऐसे ही. ओके. जो विजुअल प्रोसेसिंग है, ये मैंने अभी यही सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, दिस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, दिस इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस. वो जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं, वो प्रिडिक्टिव मॉडल्स उसको डायनामिक रखते हैं सारा वक्त. दैट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ये और किसी ऑर्गेनिज्म में हमें अभी तक नहीं आइडेंटिफाई हो सकी. दैट इज़ वाई you can read the captcha, और वो captcha होता ही इसलिए है कि आपको distinguish कर सके कि ये कोई bot तो नहीं है जो password डाल रहा है, it's a human being. And how do they differentiate? Simply, बहुत सारे तरीके हैं इसको differentiate करने के. One of them is how many, आप बताएं, what does this show?
What are those letters? S, M, W, M. Does W in any way look like a regular W? No, it does not, but still you could read it as W. ये हमारा ही brain कर सकता है, computer can't do it. और इसी को, do you know what CAPTCHA means? ये मुझे भी पिछले साल ही पता चला है. Anyway, what do you see here? यार ये लाइटें थोड़ी सी बंद कर दें प्लीज. Now this is something interesting we need to really appreciate. Be careful. Okay, good. This is good enough. Okay, what do you see here? There are two ladies standing in a room, and the shadows are consistent. So this is a single room. This looks like a split image, but this is not a split image. ये दो different images नहीं है, एक ही image है, एक ही कमरा है, और उसमें एक खातून इतनी बड़ी है, and the other one is a very tiny girl. Distance, तो ये तो दोनों तकरीबन करीब ही खड़ी हैं. How do you know? That's what you think. Okay. How about this? I can't even perceive what this is. This is a room with a giant lady at one end and this guy who can't even reach the roof on the other. There is an apparent difference in the ceiling, but still you can tell that the doors are almost similar. But you're right, they're not. This is called the Emmy's room experiment. Emmy's room एक कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आपकी सेंसरी परसेप्शन को फूल करने के लिए उन्होंने स्टीरियोस्कोपिक विजन को ख़त्म कर दिया है. सो यू ओनली सी into the room through one eye. एक छोटा सा peep hole है, so you can't see through that hole with both your eyes. So आप उसकी depth को determine नहीं कर सकते. But since you can't determine the depth, तो उन्होंने किया क्या हुआ है? Ceiling actually oblique है, slant करती है. This is way further back compared to this corner. और वो angle ऐसा बन रहा है कि आपको लग रहा है कि ये straight है. So वो illusion है relative to the other things in the room. आपको एक बंदा बड़ा लग रहा है, एक बंदा छोटा लग रहा है. This is what the Emmy's room actually looks like. Actually ये Emmy's room की construction है. इस peep hole से आप देखते हो तो ये बंदी जो पीछे खड़ी हुई है, this appears to be standing here because this wall appears straight. और वो क्यों appear straight करती है कि फ्लोर की जो पैटर्न है, जो विंडोज़ की इंक्लिनेशन है, उन सारियों को उन्होंने इस तरह मोल्ड किया हुआ है that this wall does not appear to be oblique, this appears to be right in front of you. This is what an Emmy's room looks like. ठीक है? यही illusion. What do you see here? Yes, the advertisements. अगर आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ओसाका की जो पीछे ऐड लगा हुआ है, मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये आपको लग रहा है कि एक बोर्ड खड़ा हुआ है ग्राउंड में विद अ शैडो एट द बैक. यस, बट इन एक्चुअलिटी दिस इज व्हाट इट इज लाइक. वो पेंट उन्होंने इतना स्लांट में किया हुआ है कि दूर से खड़े होके, दिस इज़ अ रूटीन थिंग. ये मैंने अपनी क्लिनिक के टीवी पे खड़े होके वहीं पे उस पिछले दिनों खींची है, जो अभी कल परसों जो कोई मैच हो रहे थे. दिस इज़ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान. सिमिलरली आप इन एड्स को देखो तो इसमें गो लूट लो का एड, ये KFC का एड, दे ऑल लुक लाइक बोर्ड्स विच आर स्टैंडिंग इरेक्ट कास्टिंग शैडोज ऑन द ग्राउंड. ये मैं कैच नहीं कर सका क्योंकि वो ग्राउंड का वो वाला पार्ट नहीं आया, लेकिन इसमें यू कैन स्टिल मेक आउट ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड सा ओब्लीक सा इन्होंने पेंट किया हुआ है ऑन द ग्रास, जिसको अगर एक डिस्टेंस से एक ख़ास एंगल से देखें तो वो आपको लगता है कि ये इरेक्ट खड़ा हुआ है. ओके, व्हाट डू यू सी हियर? ये सिंपल विजुअल ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं, लेकिन दे हैव अ वेरी डीप मीनिंग टू देम. राइट? सो अगर आपको पता चल भी जाए तो our brain is so hardwired that looking at this picture, now that you know that this lady is actually sitting at a distance and not right here where this chair is supposed to be,
still you can't force your brain to visualize that the girl is sitting, the lady is sitting towards the window and not at the chair, right? So ये इतना hardwired है हमारे वो जो feedback mechanisms हैं brain के, जिनको हमने active processing कहा है, sorry, कि ये डॉक्टर बसमा की स्लाइड से अगेन मैंने ली हुई है, जो हमारे डॉर्सल पाथवेज हैं और वेंट्रल पाथवेज हैं. वेंट्रल पाथवेज और डॉर्सल पाथवेज अल्टीमेटली सारे एंड अप करते हैं एट द थैलेमस, और थैलेमस में स्पेसिफिकली एट द पल्विनार. फॉर एवरी सिंगल इनपुट गोइंग फ्रॉम द रेटिना टू द पल्विनार, there are 9 other inputs that are modulating and deciding whether to let it go further or not. Yes. Okay. So the things that you want to extrapolate from these are, number one, when you are building a model, I said this us waqt bhi, you really need to be very picky about what you let in. The way the brain does that is the brain continuously context को dynamic तरीके से assess कर रहा है. So जो चीज़ relevant है वो ऊपर जाती है, जो चीज़ relevant है वो नहीं ऊपर जाती. दूसरी बात ये है कि हम because we are visual animals and हमारा जो visual perception है वो इतना अच्छा काम करता है कि we generally tend to believe it. And अभी जो डॉक्टर नासिर ने आपको series of pictures दिखाई हैं, उसमें आपको पता चला है कि वो कितना unreliable है. राइट तो जो वो कहते हैं ना कि आंखों देखी बस मैं बिलीव करता हूँ, आंखों देखी को भी बिलीव नहीं किया जा सकता बिकॉज उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो रॉ डेटा नहीं. Eyes do not see what the mind does not know. The brain does not know. Okay. Can anybody appreciate movement? I wanted to ask, is that the reason why we're able to read sentences even though they have a lot of time? Yes, because the brain predicts and it tells you that this is what it's supposed to be. So regardless of what the spelling arrangement is, as long as the first and the last letters are what you expect them to be, you can read it. So for people who have dyslexia, is it कि उनका जो predictive model है? Predictive model में error होता है, yes. Level 3, not level 1, not level 2, level 3. G. Does the same musical light only can sort of predict where a song is going to end or like the music will shift? Yes. There are a lot of things, lot of examples in everyday life. Like you said that eyes don't see what the mind doesn't know. Uh-huh. It's very interesting because in older times it said they couldn't see blue. But is that because they couldn't identify the color in terms of the name of it, or did they just not see the color? Probably they could not distinguish blue from green. Because there's also a Namibian tribe that has a lot of names for green. Uh-huh. They can, so if we're shown two very similar shades of green, we'll think they're the same, but they can differentiate. Yeah, you don't have to go to Namibia to actually experience this. Ask any girl. Yeah, she will tell you 22 colors of shades of pink, which you probably can't appreciate, so right? Hardwired. No, we see them, we can't appreciate, our brains can't distinguish. ठीक है? Okay. It's too big for you to appreciate movement, but try to concentrate. Keep moving your eyes on this image, and while you're moving your eyes from one end to the other, the part that you're looking at stops moving and the other part starts to move. Can you appreciate that? None of these things is moving. Similarly, can you see these rollers rolling? These are all predictive things based on the direction of movement is based on the black and the white. This rolls to the right, this rolls to the left. The black is on the other side opposite to this. So ये brain के अंदर जो हमारे peripheral, और notice करो जिस चीज़ के ऊपर आप concentrate कर रहे हो, that stops moving. Because movement perception is a bigger function of the peripheral retina. ये rods का function है और वो contrast की वजह से movement को appreciate करते हैं. So ये सारी वो चीज़ें हैं which give you an idea about how the brain tries to predict what to see. Why is that under like the influence of
certain things, these things start getting like more pronounced. Or so you say. I wouldn't know myself, but I have been told. Not that I've experienced myself, right? No. But I mean, they say that you start seeing patterns in like the clouds or in the leaves and stuff. And so have you been told, right? Yeah. Yes, वो यार यही है कि those drugs, those chemicals stimulate certain circuitries in the brain while they inhibit the others. Alcohol is known to inhibit the frontal lobe. And frontal lobe, remember, is the executive lobe that decides what's right, what's not. Or those under influence of alcohol, या जो drunk हो जाते हैं, they can't differentiate between things जो socially acceptable हैं और socially acceptable नहीं हैं. वो जो इनका behavior है, उसमें वो suppression की वजह से वो behavior बन रहा है. इसी तरह जो psychedelics हैं, उसमें वो stimulation की वजह से वो बनती हैं. वो जो hallucinations होती हैं, जो colors और patterns नज़र आते हैं, वो over stimulation of certain circuits है. और ये level 3 circuits की बात हो रही है. Hearing में भी इसी तरह हमें हेयरिंग को इन्हांस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी फिजिकल एड्स की ज़रूरत पड़े. जी. What's wrong with your brain if you're still dizzy from that image? उसका एक ही हल है पुत्र, आंखें बंद करो और थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाओ. Question about unseeing things. So, for example, the image that you showed about the vases, I've seen that before, right? At that time, I remembered what it was, but right now, when you showed it, I forgot it. So I couldn't possibly remember the pattern, but as soon as you told me, I remembered I'd seen it. The context. वो जो बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में प्रिडिक्ट होती हैं और कॉन्टेक्स्ट है जो उनको प्रिडिक्शन में एड करता है. बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू के कई अल्फाज हैं जो आप वैसे पढ़ो तो आपको उनका कोई मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन इफ़ यू रीड देम इन अ सेंटेंस यू कैन काइंड ऑफ मेक आउट कि इसका मतलब क्या है. सो कॉन्टेक्स्ट गिव्स मीनिंग. I don't get the context. Okay, so think about it in a different way. So Hindi and Urdu are two registers of the same language. So the language is Hindustani, the syntax is the same, so the grammar is the same, and the semantics, the vocabulary is different. जब कोई हिंदी, जैसे जब हिंदी का समाचार चल रहा होता है और पूरा सेंटेंस बोल रहे होते हैं, pretty I can at least make out कि वो क्या कह रहे हैं. वही लफ्ज़ अगर मुझे उससे निकाल के अलग-अलग मेरे से पूछो कि इनका मतलब क्या है, I have no idea. Does that make sense? Okay, so hearing के अंदर भी since we have two ears, those two ears can differentially hear sounds at different times. और वही एक साउंड, चूँकि साउंड वेव्स ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कंपेयर टू द लाइट, साउंड्स को एक ईयर को हिट करने से और दूसरे ईयर को हिट करने के दरमियान देयर इज़ अ गुड अप्रिशिएबल टाइम लैग. और वो टाइम लैग ब्रेन परसीव करता है टू मेक अ डिस्टिंक्शन between the different directions that the sound can come in from. और यही वो इफ़ेक्ट है जिसको हम यूज़ करके स्टीरियो साउंड इफ़ेक्ट लेते हैं. जो राइट ईयर में आवाज़ आ रही है और लेफ़्ट ईयर में आवाज़ आ रही है, थोड़े से डिले के साथ आती हैं. दे आर द सिमिलर साउंड्स बट द ब्रेन फ्यूजेस दोज साउंड्स टू मेक सेंस ऑफ द डायरेक्शन. आपको पता चल जाता है कि गिटार इधर से बज रही है और ड्रमर इधर बैठा हुआ है. जी, यहाँ से कोई हाथ खड़ा हुआ था. Yes. Yes, yes. और वो भी डॉपलर इफेक्ट में भी अगर यूनिलैटरल डॉपलर इफेक्ट हो तो उसकी परसेप्शन उतनी प्रोफाउंड नहीं होती एज कंपेयर टू द बोथ ईयर्स. जब दोनों कानों में आपको आवाज़ आ रही है और वही ट्रेन गुजर गई है आपकी, वो गुजरते हुए लेफ्ट कान में पहले गुजरी है, राइट में बाद में गुजरी है, तो यू कैन एक्चुअली फील कि ये ट्रेन आपके सामने से उधर गुजर गई है. और यही चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस के लिए मैंने कहा था कि अगर हम विजुअल 3D परसेप्शन के साथ फ्यूज़ कर दें तो दैट गिव्स अ मच होलसम एक्सपीरियंस कंपेयर टू जस्ट द विजुअल 3D अलोन या जस्ट द ऑडिटरी 2D स्टीरियोस्कोपिक साउंड अलोन. इंटीग्रेशन ऑफ परसेप्शन, अभी हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की कि परसेप्शन को अगर हम ब्रेन जो सारी सेंसेशंस को परसीव कर रहा है. मैट्रिक्स किसने देखी हुई है?
और किस किस को दोबारा देखनी पड़ी समझने के लिए? ओके, मैट्रिक्स. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द मैट्रिक्स? जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये क्या हो गया? मैट्रिक्स में चले गए. Oh. Okay. मैट्रिक्स में यही हो रहा है कि वो ब्रेन को डिफरेंट तरह की सेंसरी इनपुट देता है व्हेन दे जैक यू इनटू द मैट्रिक्स. वो ब्रेन को एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे रहा है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ऑडिटरी भी है, टैक्टाइल भी है, और इफ़ यू रिमेंबर वो जो डिफेक्ट कर गया था मॉर्फियस से, वो डोजर है कौन सा है जिसने अल्टीमेटली मैट्रिक्स के वो जो हैं, नहीं नियो तो प्रोटैगनिस्ट है, जो अल्टीमेटली वापस जैक इन हो गया था विद द मैट्रिक्स. और वो स्टेक, यू रिमेंबर दैट सीन विद अबाउट द स्टेक? उस स्टेक का पीस लेता है फोक के ऊपर, एंड ही सेज दैट ऑल्दो आई नो द स्टेक डजंट एग्जिस्ट, बट व्हेन आई पुट इट इन माय माउथ आई कैन एक्चुअली फील, I can taste it, I can feel the temperature, the texture. वो सारी चीज़ें इतनी profound experience देती हैं that he cannot differentiate it from reality. So इस सारी presentation और इस सारे course का purpose ये है to tell you that our senses are like this. They are giving us an experience of the reality out there, which is based on our sensory perception. It may not be the actual reality that's there, but this is the reality our brain constructs for us. और जितनी ज़्यादा इसके अंदर sensations integrate करेंगी, उतनी reality का feel profound होता जाएगा. 3D games. 3D games में There came a time जब इन्होंने VR games को integrate कर दिया था with motion sensors, so that you could play those games while sitting in the back seat of the car. और वो जो feeling of movement आपके sense organs perceive कर रहे हैं, वो भी integrate हो रही थी with the feeling of driving a car or going in a jet plane or doing things. Yes. In that we are not like getting any Stimulation. Yes, but yes, exactly. वो हमारे ब्रेन की internal stimulation है जो उन areas को जो perceive कर रहे हैं without any receptors. Different things. Memory भी है, उसमें कुछ hardwired circuits भी हैं. Dreams के ऊपर पूरा lecture है, ठीक है? So 3D games को VR games को reality की feeling देने के लिए इनिशियली उन्होंने ये किया कि सिर्फ उसमें मोशन सेंसर्स ऐड किए, सो दैट द मोमेंट योर कार स्टार्ट्स टू मूव द गेम स्टार्ट्स टू शो दैट यूर टेकिंग ऑफ, और वो आपको फीलिंग ऑफ ग्रेविटी, फीलिंग ऑफ मूवमेंट भी आपको उस रियलिटी के अंदर और ज़्यादा इनग्रेन कर देती थी. बट देन समबडी थॉट कि नहीं यार, इससे भी ज़्यादा रियलाइज़ करने के लिए एक्चुअल ग्रेविटी को यूज़ करो. सो उन्होंने इस तरह की इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए इस तरह की गेम्स बनाई जिसमें वो एक्चुअली चेयर्स को भी मूव करते हैं, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ डाइविंग डाउन व्हेन द चेयर स्टार्ट्स टू टिल्ट एज वेल. यस, एंड दे थ्रो द वाटर एट यू, और उस फील होती है कि ये स्प्लैश हो रहा है. सो आज की प्रेजेंटेशन का बेसिक मतलब ये था कि आप लोगों को ये पता चले कि जो हमारी सेंसरी परसेप्शन है, it's a creative process. It's not a passive, static thing. ये एक कैमरा नहीं है जिसने जो इमेज उसके सेंसर पे पड़ा उसने उसकी तस्वीर बना दी. This is an actual processor जो उस तस्वीर को इंटरप्रेट कर रहा है. Dr. Basma uses an analogy between the iPhone and the Android camera. iPhone और Android कैमरा में दो बड़े क्लियर डिफरेंसेस हैं. एंड्रॉयड कैमराज आर वेरी हाई रेजोल्यूशन
and they're very, very realistic. But the picture comes out of iPhone a lot better, a lot superior compared to any Android. The reason is not because iPhones have superior cameras, superior lenses, or a superior receptor. The iPhone has a superior processor. और वो iPhone का जो सॉफ्टवेयर है वो उस इमेज को प्रोसेस करता है और उस इमेज की प्रोसेसिंग मोर रियलिस्टिक बना के आपको प्रेजेंट करता है, वेदर यू ट्राई टू प्रोसेस इट और नॉट. जी हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वंस योर ब्रेन कुछ चीज़ें इतनी हार्ड वायर्ड हैं हमारे ब्रेन में कि वो रियलिटी से जो मैच करती हुई चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करती हैं. सो चार टांगें इधर और चेयर उधर पड़ी हुई डजंट लुक लाइक रियलिटी, लेकिन वो चेयर बनी हुई लुक्स रियल. we understand it's not a chair, लेकिन वो विजुअली हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. इसी तरह मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, जो स्टीरियोस्कोपिक विजन है, वी आर ऑलरेडी डन विद आवर टाइम. द स्टीरियोस्कोपिक विजन है, उसका मतलब है कि हम राइट और लेफ्ट आई से दो डिफरेंट एंगल्स पे किसी चीज़ को देख रहे हैं. राइट, इफ वी लुक एट अ क्यूब, maybe in the next presentation I'll show you this single slide to make you appreciate कि ये मैं बात क्या कर रहा हूँ. If we look at a cube, the right eye, the image that forms in my right retina is slightly different from the image that forms in my left retina. अगर मैं उन दो images की तस्वीरों को transparencies पे डाल के overlap करने की कोशिश करूँ तो they will never overlap. वो राइट वाले के एंगल्स फ़र्क होंगे, लेफ्ट वाले के एंगल्स फ़र्क होंगे, दे विल लुक वेरी डिफरेंट और वो ओवरलैप नहीं करेंगे. बट आवर आईज डू नॉट परसीव दोज टू एज डिफरेंट. वो जो ही वो आप दोनों आंखें खोलते हो एकदम वो मर्ज कर जाते हैं इमेजेस, एंड दैट गिव्स यू अ 3-dimensional क्यूब. आप जितना मर्जी ब्रेन को ये समझाने की कोशिश करो कि ये लेफ्ट आई का इमेज फ़र्क है, राइट आई का फ़र्क है, यू कांट see that two different images. वो image आपको 3 dimensions का ही नज़र आएगा. That's because it's hardwired. So जिस तरह बहुत सारी चीज़ें, movement और अदर चीज़ें hardwired हैं, वो hardwired चीज़ें prediction model के साथ हमारी sensory perception को modify करती हैं और वो जो expected outcome है उसको जल्दी accept करती हैं और जो थोड़ी सी expectation से skew हो जाती है या different हो जाती है उसकी एक्सेप्टेंस में हमें टाइम लगता है. And the reason for that, remember, is evolution. So there's a beetle in Australia जिसमें के जो beetle का जो female है वो bright coppery color का है. So there was a beer can जो कि उसी bright copper color का था. ठहरिए मैं एक सेकंड. How many of you are familiar with the Nobel Prize? Right? How many of you are familiar with Ig Nobel Prize? There is actually an Ig Nobel Prize ceremony is held every year in Harvard, and in which they sift through all the research done in the previous year and give that prize to the most ridiculous research done in that year. And this paper that Dr. Basma is talking about actually won an Ig Nobel Prize. So Dr. Nasir is correct, but I'll tell you about the Ig Nobel Prize story also. But this was, so the beetles were trying to mate with the beer can, and the beetles were going to go extinct. They had to go in and change, the beer company had to go and change their can. The beetles were deserting their females and they were trying to mate with the beer can. All this is right, but just imagine the audacity of the people who went out and wrote a paper about it. Come on. So there was somebody at MIT who thought कि अच्छा इसको देख के क्या minimal चीज़ हो सकती है जिसके साथ mating हो सकती है. So they basically what they did was they took seagulls and they said कि अच्छा अगर seagull को मार दो तो will the male seagull try to mate with a dead female seagull? And they said that was totally true. Then they said अच्छा चलो dead वाली नहीं लेते हम rubber की वो लेते हैं. So then the male seagull was trying to mate with the rubber वाली seagull. So they realized in the end कि एक stick के ऊपर अगर आप सिर्फ seagull का head लगा दो तो the male will still try to mate with that
with that seagull. This won the Ig Nobel Prize. So basically, कहने का मकसद ये है कि reality matter नहीं करती, evolution में fit matter करती है. So आपके पीछे, remember आपकी आँख आपसे बहुत ज़्यादा पुरानी है. Homo erectus, Homo habilis, Neanderthal सबकी यही आँख थी. तो जो उसने इतने millions of years से experience किया हुआ है कि ये reality की अच्छी representation है, उसको आप 4-5 हज़ार साल की cerebral thinking से कैसे undo कर सकते हैं? This also tells you about the desperation of trying to find a relevant topic to do research on. Right? Yes, I'm done, sir. Uh-huh. And I'm not getting it. Why? Because imagine you read an alphabet, for example, B लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है, और आपकी interpretation, the way you sort of understand it, why would it be a level 3 dyslexia? Level 2 भी तो हो सकता है possibly. Level 1 भी तो हो सकता है. Why level 3? Yeah, level 1 ये है that you perceive light. Sensation is perception of light. Level 1 is trying to identify that there are some characters there. Some letters are written there. That's level 1. Level 2 interpretation is trying to find out if it makes a word or not. So yes, you're right. 2 or 3 में clarification नहीं है, लेकिन it's not level 1. It can be level 2. I read somewhere that there's this other optical illusion that a lot of people like see faces in like sockets and like other very random places. Yes. And I found out very recently that the reason for that is that there was an evolutionary advantage to recognizing faces in Yes. general. Like the negative of seeing a face and not like recognizing it as one was far worse. Serious than actually trying to make out some extra faces which were not there. Yes, you're right. I'm just a little confused regarding the point that you mentioned and how perception is unlimited and it is not dependent upon stimulus. Yes. I'm just not understanding कि अगर मैं ये कहती हूँ कि the examples, all of the examples that we see, how are they not dependent upon the intensity or the type of stimulus that we receive? No, they are देखो, sensation is dependent on the stimulus and on the receptor. Receptor अगर perceive ही नहीं कर रहा तो sensation नहीं होगी, ठीक है? Perception is trying to understand what that stimulation is, what that sensation is. वो understanding हमारी right or wrong can have multiple meanings. So उसको हम सिर्फ right meaning में limit नहीं कर सकते. So it's actually unbound by the limits of sensation itself. That's what I meant by unlimited. जी बेटा. जो हमारी nerves and neurons होती हैं उनके अंदर anatomical coding की हुई होती Hmm. है. For example, our eyes respond to light. तो and our like brain registers that जो आपने कहा था कि signal सारा same होता है but वो sensation or perception बल्कि it's different, right? Absolutely. But for example, if we do experiments, for example, there's an experiment that we studied के people who have been blindfolded. After a while, their occipital lobe starts responding to sound rather than vision, right? So वो brain की plasticity है. But like, I just want to know कि in the machinery of the receptors and in that entire process, what exactly is going on that the occipital lobe is now responding to sound rather than vision? Okay, पहली बात, it does not happen so simply. For the occipital lobe to start to respond to sound, it takes years of feedback and training, and only then can you train the occipital lobe to respond to sound. This is what happens when a stroke person starts to walk. That part of the brain, जिसने उसकी movement करनी थी, is dead. So the motor strip, the motor homunculus, the motor cortex is dead. So how can a stroke person still learn to walk? By actually using the motor association areas, the adjacent areas जो motor planning करते थे, उनके कुछ parts ultimately नए circuits form करते हैं and they get connected with the descending pathways that actually control movement. So all this takes years of practice. So वो जो plasticity की हम बात करते हैं वो इस तरह नहीं है कि आपने blindfold किया और 2 दिन के लिए blindfolded रहे.
और आपके वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में वो आवाज़ आनी शुरू हो गई. देयर इज़ दिस गाय, वो जो मेकिंग न्यू सेंसेशन वाला था, क्या नाम था उसका? हाँ, देयर इज़ दिस, सॉरी, टेड टॉक वाला जो था, हाँ, द जैकेट वन. इसका बहरहाल मैं रेफरेंस ज़ैनब को दूंगा एंड शी कैन पोस्ट इट ऑन योर LMS. There is this guy who is trying to develop new ways of perception, और उसने tactile perception को different meaning देने की कोशिश की है. Trying to use deaf subjects to perceive sound just by the vibration at the back. और वो वाइब्रेशंस के लिए उसने छोटी छोटी मोटर्स, जिस तरह हमारे फ़ोन्स में हैं जो सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे हमें परसीव कराती हैं, वो छोटी छोटी मोटर्स लगा के जैकेट में उसने उस पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन को डिफरेंट साउंड्स के साथ कोरिलेट किया है. एंड पीपल कैन एक्चुअली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड. दैट्स अ ह्यूज revolutionary paradigm shift, कि वो जो स्पोकन वर्ड है, विदाउट यूजिंग द ईयर, विदाउट यूजिंग द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, देयर आर पीपल हु कैन नाउ अप्रिशिएट कि वो क्या बात हो रही है. सो इस तरह हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है. वो टच वाले एरिया को साउंड का मीनिंग देने के लिए कनेक्शंस नए फॉर्म करता है, लेकिन इट टेक्स years of practice. It can't do it immediately. Hallucinations? No, hallucinations are non-contextual. Hallucination is when you start to perceive something which does not have any stimulus. So stimulus के बगैर perception जो है वो hallucination है. जो इसकी आप बात कर रहे हो जो context से relevant नहीं है, that's called an illusion. Illusion is when you start to see a cat just running by past you in dark. आपको अंधेरे में कोई चीज़ एकदम लगी है कि शैडो सा मूव किया और आप यू इंटरप्रेट इट एज अ कैट. दैट्स कंटेक्चुअल, कि उस कॉन्टेक्स्ट के रेलेवेंट है. हेल्यूसिनेशन इज नॉन कंटेक्चुअल. हेल्यूसिनेशन जस्ट अपीयर्स और उसका कॉन्टेक्स्ट आपकी सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. So, a family member had dementia, right? So they started like mixing context with a lot of stuff. Like Yes. See, like 30 years in past, something like that. So is that illusion or is that like hallucination? Is that like No, that's totally different. That's living your memory. There is जो psychological terminology है वो बहुत vast है. उसके अंदर hallucination, illusion, delusions, ये बहुत छोटा proportion है of the total hierarchical thinking of our brain. So ये जो dementia में होता है, dementia में what they lose is not memory. They do lose memory. That's a part of dementia. But because of that, memory से associated जितने functions हैं वो lose हो जाते हैं. So all cognitive functions are gradually lost. और cognitive function में सारी sensory processing भी शामिल है. So वो ये भी context भी lose कर जाते हैं, memories भी lose कर जाते हैं, और वो फिर उनको वो जो hardwired memories हैं, जो long gone memories हैं, वो उनकी फिर surface करनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है. So dementia is a complex, unfortunately, disease. जी पुत्र, आपने नहीं पूछा सवाल. I had a question related to when we talk about eyes do not see what the brain does not know. So That was just a problem. Okay. अभी भी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल्स, तो एक जो बच्चा है उसका तो अभी Yes. Yes. How does that kid start to? No, the kid starts to develop those prediction models. वो prediction models develop होते हैं. और वो प्रिडिक्शन मॉडल्स दो तरह के हैं. एक हार्डवायर्ड हैं, वही जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि मूवमेंट के अंदर आई हैव अ लिटिल एक्सरसाइज जो आप लोगों से मैं करवाऊंगा. कुछ हार्डवायर्ड मॉडल्स हैं जो वी आर बॉर्न विद, एंड कुछ मॉडल्स हैं दैट वी लर्न. वी आर हार्डवायर्ड टू लर्न टू बैलेंस, बट स्टिल वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप टू बैलेंस. राइट. इसी तरह डांस हमारे अंदर हार्डवायर्ड नहीं है. सो वी कैन लर्न टू डांस, और वो डांस में भी वही मूव्स जो आपने पहले किसी डांस में सीखी हुई हैं, अगर कोई और मूव्स आप सीख रहे हो और वो उनसे सिमिलर हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू लर्न देम फास्टर दैन टू लर्न टोटली न्यू मूव्स. सो वो जो आपकी हार्डवायर्ड चीज़ें हैं वो प्लस द लर्नड थिंग्स,
both contribute towards predictive model. और वो जो learned things हैं वो बच्चे के पास शुरू में नहीं है, वो acquire कर रहा है. और ये इसके अंदर ये जो आपको मैंने feedback loop दिखाया था, okay, ये इस feedback loop में अगर आप देखो तो सिर्फ feedback नहीं है, ये आगे भी जा रहा है. इसका मतलब है कि every time we perceive actually remodels the predictive model. हमारी perception, इसीलिए कहते हैं कि repetitively अगर कोई चीज़ होती जाए तो वो predictive model ज़्यादा strong हो जाता है. लेकिन अगर आप में से शायद आपने पूछा था कि वो conflicting messages आ रहे हों तो वो predictive model develop ही नहीं करता. कोई model कोई message कह रहा है कि इसको करो, कोई message कह रहा है इसको ना करो. So वो predictive model भी update हो रहा है. जी. Yes, yes. Right while we are learning, while we are perceiving, वो perception continuously learn भी हमें करवा रही है. It's like there is this Buddhist sect called Zen. और वो Zen में one of their ways to meditate is to dance. और वो जो Zen moves हैं, वो Zen moves exactly अगर एक जैसी भी आप कर रहे हो तो the Zen masters do not call them the same moves that we did yesterday. They call them new moves because the context is new, the time is new. Just the fact that you're doing them anew are new, right? So ये वो साथ साथ हम learn करते जा रहे हैं, predictive model भी change हो रहा है, plus वो हमारी sensation को भी color कर रहा है. एक और हाथ आया था, one last question. जी बेटा. Louder. You said that the connections. Louder. You said that the connections between different like parts of your brain, like for example, like auditory combined with like sensation or visual. Right. Cortices who combine over, then this takes years, right, for this plasticity to. True. So how is it? LSD, for example, does it within seconds. Like if you're touching this, it doesn't feel like wood; it would feel like water. For example. That's because the LSD does not make circuits. LSD randomly stimulates certain circuits which are not meant to be stimulated by those sensations. How are those integrated? They're not integrated. That's why they don't make any sense. You understand, water is not supposed to feel hard. When you touch this, oh, sorry. sorry. Sorry, when you touch this, you feel it's water, but it also feels hard. वो जो discrepancy है ना हमारी sensation में, that's a part of that LSD experience. Like schizophrenia, would you say that different receptors and different pathways are getting affected? Yes. And there's no integration. Yes, they lose integration. So we're going to talk about schizophrenia in great detail at some point or the other. And LSD and schizophrenia are not the same thing at all. Yes, one last thing. How many of you have heard the Beatles? Obviously. Good. Lucy in the Sky with Diamonds. Okay. The whole song gives you the experience that you're talking about. Thank you very much.